Hello everyone, welcome back to yet another lecture of grammar on a very important topic, conditional sentences. Dear students, what are conditional sentences? How many conditional sentences do we have in English? What are their functions? What are their usage? I'm going to discuss them one by one in detail, and I'm pretty sure you will be able to understand it easily and you'll not make any mistake that most of the students make. तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, कितने हैं, यूजेज क्या है उनकी, किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल वन बाय वन. इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू two types of conditional today, as we have four types of conditional, and I'm going to discuss it in the brief introduction as well, so that you understand and know that there are how many type of conditional sentences. So dear students, we have got four types of conditional sentences: type 0, type 1, type 2 and type 3. So I'll be discussing first type 0 and type 2 in this lecture, and the next I'm going to cover type 2 and type 3. So let's understand first of all the word conditional. कि conditional word क्या है, ताकि आपको conditional sentences का पता चल सके. और जाहिर सी बात है, unless and until you know what is the word conditional, you will not be able to understand the types of it. तो स्टूडेंट, जो वर्ड कंडीशन है इसके दो मतलब है. एक कंडीशन का मतलब है शर्त, और दूसरे कंडीशन का जो आसान मतलब है दैट इज हालत. लेकिन यहाँ पे जो वर्ड कंडीशन है, यहाँ पे हालत के लिए नहीं बल्कि ये शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल तौर पे जैसे आप मोबाइल फोन पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो यू गेट एन ऑप्शन टर्म्स एंड कंडीशंस. तो देयर कंडीशन डज नॉट मीन हालत, देयर इट मीन्स शर्त. इसी तरह से आप कहते हैं कि आई विल कम विद यू बट आई हैव अ कंडीशन. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, शर्त है. और कंडीशनल जो है वो शर्तिया. कंडीशनल मीन्स शर्तिया. कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमले. So we have, as I said, four types, starting from type 0 to type 1, type 2 and type 3. So I'll be covering and I'll be teaching you all one by one in detail with their different formation and usage. So let's dive in and understand it one by one. So let's begin with the type 0. What is type 0? Type 0 क्या है? I'll be explaining it with the definition, formation and example, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि type 0 क्या है और कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं. So that is the first type. So dear listeners, we use type 0 to talk about a condition that is used for scientific facts, universal truth or situations that are always true. Now let me simplify. The condition which is scientifically proven, which is a universal fact or a universal truth, or it is a kind of situation that cannot be denied, that is true and that is acceptable generally and no one can deny it. उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम टाइप 0 का इस्तेमाल करते हैं. यानी ऐसी कोई सच्चाई, साइंसी हकीकत या कायनाती सच्चाई या ऐसी सच्चाई जो आमतौर पर जो है एक्सेप्टेड है बाय द मेजॉरिटी या जनरली एक्सेप्टेड है, उसको हम क्या करते हैं, शर्तिया तौर पे टाइप 0 में बात करते हैं. वी टॉक अबाउट दैट कंडीशन इन conditional type 0 with a condition, since it is already a conditional sentence. जैसे मिसाल तौर पे if you cut your finger it bleeds. अगर आप अपने उंगली को काटते हैं तो it bleeds, ठीक है, खून निकलता है. अब जाहिर सी बात है, it is something that cannot be denied. अब आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते. तो ऐसी सच्चाई को हम क्या करते हैं, टाइप 0 में डिस्कस करते हैं. और we use type 0 for such universal or scientific fact. So what is the formation? इसका फॉर्मेशन क्या है, किस तरह के या किस तरह से हम जुमले बनाते हैं. द फॉर्मेशन इज इफ और व्हेन. हम इन दोनों में से एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. आई मीन वी यूज वन ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इफ यू नो अबाउट कंजंक्शन, सो दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो या तो इफ या तो व्हेन, ज्यादातर हम इफ लगाते हैं, यानी अगर या जब. सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल. इसमें हम प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं. आई मीन ट्वाइस वी यूज द सेम टेंस रिपीटेडली, present simple and present simple. So let's try to understand the examples, and before explaining the examples let me tell you two more things. ये जो वाला स्टूडेंट्स पार्ट है इसको हम बोलते हैं if clause, ठीक है. If you have idea about clauses तो आपको शायद समझ आ रहा होगा अच्छे से कि what I am talking about. इस वाले पार्ट को हम कहते हैं if clause, या हम इसे कहते हैं condition clause, क्योंकि ये वाला जो clause है
ये इफ यानी कंडीशन की बात करता है, शर्त की बात करता है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द रिजल्ट क्लॉज, इसको हम रिजल्ट क्लॉज भी बोलते हैं और इसको जो है हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज मेन इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो इट इज द रिजल्ट क्लॉज। ये शर्त है, दिस इज कंडीशन एंड दिस इज द रिजल्ट। शर्त क्या है? इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्माते हैं, देन क्या उसका रिजल्ट क्या होगा? तब क्या होगा? इट मेल्ट्स, वो पिघलता है या पिघलती है। नाउ दिस इज व्हाट इट इज, the result. Condition, result. Similarly, we get hungry if we do not eat food or we do not eat for long. Now this is the result and this is the condition. अब यहाँ पे मैंने reshuffling की है, that I will make you understand कि इस तरह से भी possible है कि आप, जरूरी है कि हमेशा अपना conditional sentence if से शुरू करें या when से शुरू करें। You can reshuffle, यानी आप जो conditional clause है उसको आप बाद में रख सकते हैं और जो आपका रिजल्ट क्लॉज है उसको आप पहले रख सकते हैं, यानी दैट इज कंप्लीटली अप टू यू एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू रीशफल इट। आप इसको रीशफल कर सकते हैं, पहले आप जो है कंडीशनल क्लॉज को रखें या रिजल्ट क्लॉज को रखें। लेट मी शेयर मोर एग्जांपल। जैसे आप कहते हैं इफ यू गो आउट इन द रेन यू गेट विट, इफ यू वॉक मेनी किलोमीटर्स ऑन फुट यू गेट टायर्ड, इफ यू वर्क हार्ड you get success, if you read books you get a lot of information or knowledge. So similarly we use type 0 to talk about all universal, general and scientific fact which are scientifically proven or something that cannot be denied, क्योंकि वो accepted है तो इसका आप इनकार नहीं कर सकते। तो we discuss such actions or such conditions in type 0. Now let's try to understand type 1 ताकि इन दोनों का आपको फर्क भी पता चले and difference का पता चले कि how we use type 0 and how we use type 1 or where we use type 1 and 0. So what is type 1? Dear listeners, we use type 1 to talk about condition that is either real or it is possible. The situation is possible. It is real because it is likely to happen, it is likely to occur, but it is also at the same time can be real and also possible. यानी ऐसी situation जो मुमकिन है, जो possible है, if the condition is fulfilled, अगर आप उस condition को यानी शर्त को पूरा करते हैं तो possible है, ज़्यादा chances हैं कि you get the possible result, and it also depends on the condition and it can be in the present or in the future. Okay, now let's talk about the formation, कि इसका formation क्या है। जैसे I hope you understood the definition. Now what is the formation? The formation, actually dear listeners, we have got 3 formations here. इसके मैंने 3 formation लिखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि where we use conditional type 1 like for action, how we use it for action, how we use it for status, presence and absence, and how we use it for position. So I have categorized the formation in 3 different ways, in 3 different variations. तो फॉर्मेशन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। हाउ वी यूज टाइप 1 फॉर एक्शन, हाउ वी यूज टाइप 1 फॉर स्टेटस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस, एंड हाउ वी यूज टाइप 1 फॉर पोजीशन। तो एक्शन वाला जो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन है दैट इज विद इफ और व्हेन, जैसे टाइप 0 में हमने देखा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल। Now it's not only future simple, along with future simple I mean with will and shall we can use other models like can, may, and in some cases I have already mentioned here we can also use must. So this is for action, right? How, for example, if you work hard you will get success, if you practice English every day you will become a fluent speaker. Now this is type 1's action formation, how we show sentences of action. अब बात करते हैं इसके स्टेटस की, प्रेजेंस एब्सेंस की, यानी प्रोफेशन एंड स्टेटस। if, when, one of them, either if or when, like mostly we go with if, and then is, am, are, and I'm pretty sure you all know where we use is, am and are, and then noun adjective। ये इसका है फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज फॉर स्टेटस। अच्छा, इसके बाद जो है आप फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर सिंपल के साथ साथ मे और कैन को भी ले सकते हैं टू कनेक्ट और टू ज्वाइन दिस फॉर्मेशन विद दैट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है इफ he is in the office I will meet with him. So this is type 1's status. For example, if he is in Karachi he will buy a book
for me from Urdu Bazaar. Now this is showing the presence of someone in Karachi. Similarly, if teacher is in the class, she will rebuke you for coming late. Type one's state and status and presence and absence. Now the last one we have is position, the formation for position, property and ownership in conditional type 1 to show a condition. मतलब शर्तिया तौर पे जब आप एक पोजीशन की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, ओनरशिप की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस बुक आई विल गिव यू, इफ आई हैव दिस बुक आई विल गिव यू, अगर ये किताब मेरे पास है तो मैं आपको दे दूंगा. इसका फॉर्मेशन क्या है? इफ और व्हेन, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन the subject, as per the subject. अब I am pretty sure that you know about has and have कि कहाँ पे has लगता है, कहाँ पे जो है have लगता है. अगर नहीं पता तो we use has with third person singular like she, he, it, and we use have with first person I, we, second person you, and third person plural like they or students or any plural name. Noun, adjective. So this is for position. For example, if he has a car, he will go for a picnic. If she has food, she will eat it. So these are the three different formations of type 1. This is for action, this is for state, status, presence and absence, and this one is for position. And I have some more examples for you to share with you. Let me talk about them as well ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाए. If he knows answer, he will tell us. Now this is for action, position or status. What do you say, dear listeners? So this one is for action because I have used present simple first and I have used future here. So this talks about an action. It's an action sentence. If father is at home, he can take us to Karachi. Now this one is for status, present absence or action. So this one is from action. अगर अबू घर पे हैं तो वो हमें कराची ले जा सकते हैं. And I have used here can because we can use different models to show variation in degree of possibility or in the possibilities. Then this one, if I have this book, I'll provide you. Now this one is from position to talk about conditional position. So let's say student, this is conditional clause, that is the result clause. You can reshuffle them, you can change their place. आप if वाले clause को बाद में ले जा सकते हैं और result clause को पहले ला सकते हैं. So this was all about type 0 and type 1, and I would really like you to share at least 2 examples with us, one from type 0 and one from type 1. And if you have any confusion, any question, so feel free to leave us a message in the comment box. And yes, last but not the least, we also have notes on these topics, including other topics that I have already covered, and we also have prepared and designed notes from conditional sentences for you. If you require or need the notes, let us know in the comment and we'll just share the notes with you as well.